Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome once again to my channel. For those of you that are existing subscribers, you are most welcome. If you are new to the channel, you are also most welcome. So as you can see, we are at the famous Texila Museum that has got many artifacts. So it starts off with this garden, and then we have a board that as well as being a greeting board, gives us the information that it was started in 1928 and is the home to a significant and comprehensive collection of Gandharan art and the vast collection of more than 7,000 objects. So we are talking 600 BC, and this place is a UNESCO World Heritage Site, or the artifacts most certainly are. So I'll just go up and down this once more. So this place is very significant for the Buddhist faith. So we're going to go inside now into the garden and the museum itself, and I do hope you're going to enjoy it. So as you can see, it's a beautiful gardens outside, and today's there's a rally going on, so there's a lot of activity as well. So this is the entrance. So as you can see, the museum was established in 1928. So let's go inside. So there are many artifacts and statues here. So this is a cast of the Stupa Mahara Moradu. Okay, so I'm afraid my knowledge of the Buddhist faith doesn't extend to that, but in this room there are many artifacts that we will have a look at. In this area, viewers, we have many pictures of the community at that time of the Dharamahar Rajaka Stupa, which is the 3rd century BC to the 5th century AD. So as you can see, it was a very complex society. So this was their city, obviously the capital of the time, and on this one we see a lot more of the settlements. So this is estimated in the 2nd century BC. So these are the excavation sites, and we can visit them if we so wish. This is Jandehal Temple. So on here it tells you the route of the Silk Road, which was started at this period. So this is the Mehra Morhadu, which was a community in the hills. And this is another large community called Julian Stupa, and there is actually a monastery in there as well. So this is another what we call stupa, Bahamala Stupa, which I think is a religious site. On this site, this space here, we see examples of some of the stone that has been recovered, and it has been made into this wall. So it's a small diaper masonry which originates in 1st and 2nd century AC, and we've got some larger ones here. Okay, just show you outside that
it is surrounded by beautiful, beautiful gardens. I'm back in the main hall, and we see some artifacts that are utensils and other household items. So this is the start of the museum, viewers, with various artifacts. I do have a guide with me, and I'm going to ask him to explain what some of these artifacts are. जनाब आप बता सकते हैं कि ये artifacts क्या? ये artifacts जो है ना लाइफ ऑफ बुद्धा है. अच्छा. बुद्धा बर्थ एंड डेथ. ये स्टेचू क्वीन माया है. माया इसकी माँ थी. ठीक. ड्रीम में उसको एलिफेंट नजर आया. ठीक. आफ्टर वाले सीन में सिद्धार्था का बर्थ एंड बाथ दिखाया है. सिद्धार्था बुद्धा का ओरिजिनल नेम था. ठीक. इस सीन में इनका पैलेस दिखाया गया है. ठीक. अदर सीन इनके महल का. ठीक. और ये इसका पहला वाज धर्म चक्र. ये ऑल ओरिजिनल पीस ये 2000 ईयर ओल्ड है. ठीक. और ये गंधारा का आर्ट है. ठीक. ये कहाँ से वसूल हुए? ये ऑल पीस टेक्सला से. ठीक. क्योंकि टेक्सला हिस्टोरिकल प्लेस है. इसके आसपास इसके रिमेन्स हैं. टेम्पल्स हैं, स्टूपा है, मोनास्ट्री है. स्टूपा क्या होता है? स्टूपा बेसिकली ठोम है. टूम होता है. ठीक. ठीक जी. हाँ जी. ये इसकी प्रिंस वाली जिंदगी. कौन प्रिंस? सिद्धार्था. ओके जी. सो ये कब था प्रिंस? सेकंड एंड थर्ड सेंचुरी. So second and third century AD. Sitting, offering for member and for boats. Okay. Other one, meditation scene, angels is a flower. Okay, so what you see here is some casts in stone that show meditation scenes. Two scenes, standing preaching, offering by monkey, honey pot. Oh wow. So in the Buddhist faith there is a honeybird monkey that is preaching. That one, Sidon preaching. Sidon, is that a monkey also? What is it? Monkey, that one. This is monkey, but what's Sidon? Stone name schist. Second or third century. Thank you, sir. अच्छा मैं एक सेकंड आ रहा हूँ. So I'm not sure what this is, viewers, but it says Miracle of Srivasti. So no doubt there was something miraculous done, and it is celebrated in this cast. This shows the cremation of Buddha, and Death scene. This is the and death this scene. One. Death scene. That side is a cremation. Okay. So both these are death scenes. So this one very nice scene. One person, two stay. First Buddha, second Bodhisattva. Carving on the one piece. Okay, so on this carving there are various stages shown of the Buddha. So viewers, what we see here is by and large stone made, and then on this side it is what's known as stucco. So these are all original piece meditation. So these are all meditation scenes for Buddha. This will be meditation. There's a meditation here as well. This is a Shila, Greek style. Okay, Shila, is that a meeting? What is a Shila? Shila क्या होता है? Shila, ये आर्ट जो है ना ये ग्रीक लोगों ने बनाया. ठीक. This is in the Shila art, viewers, and it's made in Greek times. And this is a stupa. This one real James old time, 2000 year old. So stupa, as we've established, is a temple, a tomb, and this is an example of the type that existed at the time. अब इधर से बनाया. So on this side we've got other scenes. Are they all of the Buddha? Or what are these scenes? Teaching and meditation. Okay, teaching. So these depict teaching and meditation. Other
scene is a feet up, is a yoga style. This is yoga. Big one meditation. So here we have more meditation. This 3 scene is a yoga. So we've got yoga on this side as well. Ye stupa, tomb. So another, Inside ashes for monk people and Buddhist people pray. China, Korea, Japan, Thai, Sri Lanka. so another stupa that is revered by Chinese, Koreans, etc. This one different face. This side and last, only Buddha faces. Okay, so what we have here is all the faces of Buddha. ये क्या है जी? Ye all faces Buddha. बुद्धा के faces है जी. Ye very nice face Buddha had Dharma Raji ka. ये भी बुद्धा है. Buddha hai ji. बुद्धा है जी. So we Ye see bhi all Buddha faces. all statues, or I don't know what the word for heads is, of Buddha. So in other words, not a full thing, but they are the heads of Buddha as depicted by various sculptures. This one meditation scene, 5th century AD. So we see Buddha. a meditation scene here for Buddha in the 5th century. Other one colorful scene, teaching and meditation scene. Okay, so this is all teaching and meditation. These are all Buddha and follower. Okay, all Buddha and his followers, viewers. Khubsurat scene, smiling Buddha, smiling face. So we see a smiling Buddha in this scene because normally he is meditating and we don't see a smiling face. These are different monks people. Okay. Preacher, So follower. these are all followers and monks of the Buddha over time. So this is the final section, and once again the artifacts are stone. So this is that Buddha again? Sorry, ये कौन है? Standing preaching? कोई goddess है कि क्या है? Buddha hai. बुद्धा ही है. अच्छा. Sort of different. ठीक है जी. ये भी डेथ एंड पैलेस सीन. ये फिर से पत्थर का काम शुरू हो गया, स्टोन वर्क है. So again we see some stonework and it highlights the the birth and death of Buddha. This one meditation scene, This 2nd and is- 3rd century. This is a meditation scene during the 2nd and 3rd century AD. Other one different scene for Buddha. Dharma Raji ka Moda Maradu. Okay, so various scenes for the Buddha. This one very nice scene, Siddhartha top horse. Many book inside horse named Kantaka. So here his horse is depicted, which was called Karantar. This one different scene, teaching and meditation with follower people. Okay, so we've got some castings within the stone showing different scenes of meditation. These are all faces, Buddha faces. Okay, so we've got lots of faces of Buddha again. This one very nice scene, Bodhisattva. So this is Bodhisattva Before Buddha. before Buddha. Okay, so is that still the Buddhist religion or is it Hindu? ये हिंदू रिलीजन का है कि Hindu se convert to Ashoka Buddhism. ठीक. Before Buddhism, there were many gods in the Hindu faith and they converted to Buddhism. This is a teaching scene and meditation scene. Okay, here we see teaching and meditation. Last valley inside. So in this section we see many artifacts in limestone and they are mainly Buddha faces. These are all Buddha faces. This one very nice face. Okay, Dharma Raji. Buddha faces throughout the prehistoric. Buddha style.
yoga style Buddhist. More faces of Buddha. This face is from Dharma Rajika, and this face is a color use. Okay. Lips and eyes. So here you see smaller statues that just depict lips and eyes, and the more fuller face is in these castings. This one meditation scene. Very good. And here we see meditation scenes. We're going to go across These this. are some pottery. Oh, clay so material. here we see some pottery from the era. So this time period, कौन सा? 1800. 1800 BC. Yes. 1800 BC. ये monks. So here we see the faces of monks of the time. अगर हम Atlas, this is a Greek god. Atlas, the Greek god, is depicted in that statue there, as well as a lot of the other. This material is a pottery, clay, children toy. Very good. So these are toys that were used by the children at that time. We're talking 1800 BC. These are all pottery, clay material. In this display, Water pot. once again, we see clay pots and water pots. And finally, in This this, one copper and metal. so here copper and metal is introduced. ये कौन सा period है? ये first century AD. First century AD. So copper has been discovered and used here. That's the journey that we've made so far, viewers, showing the earlier artifacts. We're in another section now, and I'm going to ask a guide, explain what these stones are. ये बता सकते हैं ये क्या है? अच्छा, ये जो थर्ड गैलरी है ना, इसमें सारे हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। Household सबसे objects. पहले तो सर ये आप देखें, ये सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है अरामिक लैंग्वेज, जिसको हेब्रू भी कहते हैं। ये बेसिकली जीसस लैंग्वेज थी, सीरियल लैंग्वेज या जूइश लैंग्वेज जिसको कहते हैं। ये यहीं से टेक्सला से डिस्कवर हुई। So you see an artifact here that contains the Hebrew language. और इसके बाद यहाँ इसके अलावा इस एरिया में फरोश्ती लैंग्वेजेस भी मिली हैं। और फरोश्ती जो थी एक्चुअली ये गंधारा लैंग्वेज थी। ठीक, ये नीचे कुछ सील्स वगैरह पड़े हुए हैं, स्टैम्प्स वगैरह। ठीक। और इसके अलावा ये आगे हमारे पास जो लैंग्वेज है, इसको अरामिक, इसको जो है ना, ये संस्कृत बरमी लैंग्वेज आ गई, जो कि लोकल लैंग्वेज थी, इंडियन लैंग्वेज। और ये यहाँ विश्व बार के ऊपर लिखी हुई है। ये ऊपर इंक पड़े हुए हैं, जिससे वो लिखा करते हैं। ठीक. So these are implements for writing in Sanskrit and other languages. और ये जो आगे ऑब्जेक्ट्स पड़े ना, ये सारे गॉड ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। जो हिंदू लोग थे उनके गॉड एंड गॉडेस की पिक्चर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप मोल्ड एंड मोल्डेड ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, जिनमें वो ये स्टैचू बनाया करते थे। Okay, so these are all gods and goddesses of the Hindu faith. इस साइड पे ये सारे लैंप्स वगैरह पड़े हुए हैं, ऑयल लैंप्स, जो Okay. कि स्टूपा शेप में, टर्टल शेप में, लीफ शेप में, candle What we shape see here is lamps, viewers, that are in the shape of tombs. ये पूजा के लिए ये किस मकसद? सर ये जो जहाँ वैसे पे टेम्पल वगैरह मिले हैं, वहाँ पे ये यूज़ किया करते थे लाइट वगैरह के लिए। Right, so these are used for just light. ये यहाँ पे आप मेटल से बनाए जो ऑब्जेक्ट्स आप देखेंगे, चूँकि आपको इल्म है कि यहाँ पे टेक्सला में ग्रीक लोग रहे हैं। ये ऊपर जो जग देख रहे हैं, इसके हैंडल पे सी हॉर्स बना है, इस कंपनी का ये। Okay, so I'm told, viewers, that the Greeks also inhabited this area, no doubt, during Alexander the Great's time. And what we have here is some metal objects. ये copper है कि ये mainly copper and also bronze. और इसके अलावा यहाँ जो आर्टिफैक्ट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट गॉबलेट्स वगैरह उनके आगे हैं, ड्रिंकिंग का। So we see some goblets here that are no doubt used for parties by the nobility. ये इस साइड पे डिफरेंट बाउल्स वगैरह एंड जो कुकिंग के लिए यूज़ किया करते थे ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ये नीचे आप देख सकते हैं। So we see some bowls for eating and other things for cooking. सो इस साइड पे जो है ये एक तो बड़ा है, ये सामने हॉट पॉट है। इसके अलावा कुछ प्लेट्स हैं, डिशेस हैं एंड बेकन वगैरह, लिड ऑफ द पॉट्स, ये पड़े हुए हैं। Okay, more household, what can we say, pots and pans, really. जो ब्रेड पड़े, ये फ्राई पैन्स वगैरह आ गए, इनके स्पॉन्स वगैरह पड़े हुए हैं।
Oh, so ये किस period के हैं? ये सर ग्रीक स्टॉक है, जी, 2nd century BC. well, these objects are 2nd century BC viewers, and there's not much difference between them and the modern day ones, really. So we've got some large scoops and smaller spoons and pans here. और इसके अलावा ये सामने फोल्डिंग चेयर भी पड़ी है, मायरिंग स्पून एंड स्पून होल्डर भी आ गया. Okay, yeah. What you see here is metal spoon holders. Oh, you okay? फोल्डिंग चेयर. Folding chair. Wow, ahead of its time. Or various scoops. इस सेट में जो गिफ्ट पड़े ना ये सारे आइवरी वाले हैं. टॉप पे आप देखें जॉफ एलिफेंट के पीसेस हैं, लास्ट में सी Very good. आ गए. ये नीचे चाइनीज गेम्स आ गई माजो. इसके अलावा ये बैंगल्स पड़े हैं, लास्ट में हेयर बैंड्स, ज्वेलरी और मैनिएचर्स वगैरह. Very good. All these items are made from ivory viewers. किस period के हैं ये? और किसके? आइवरी. Ivory. किस period के? तारीख? 4th century BC, These are 4th century BC. 5th century AD. ये सारे बच्चों के खिलौने वगैरह टॉयज आ गए उस टाइम पे. इसमें ये विसल वगैरह भी हैं, डिफरेंट एनिमल कार्ड में आप देखिए ये ट्रोजन हॉर्सेस भी आपको नजर आएंगे. So here, सेंटर अपने सेक्टर किसी लेके आए. so किस period के हैं ये? ये 4th century BC. 4th century. Here we see that some of the toys that were used by children during the 4th century BC. फिर ग्रीक से आ गया 2nd century BC में जो ग्रीक लोगों ने कॉस्मेटिक के चीज़ें जो यूज़ की हैं. इसमें ये जो टॉप पे पड़े ना ये सारे मिरर्स थे. इसकी शाइनिंग से वो अपना चेहरा देखा था. Wow. These are very early Greek makeup mirrors and इसके अलावा other ये दीगर टॉयलेट आर्टिकल्स भी हैं जिनके अंदर डिफरेंट कलर्स पाउडर ये चीज़ें रखी हैं. and other things that were used for makeup really. और ये जो सामने निशान बना है ये स्वास्तिका जो था ये आर्यंस का हिंदुओं का निशान Achha. What you see there is the swastika sign, which of course was adopted. Sorry, it is an Aryan sign, but then it was adopted by the Hindus. एंड इसके अलावा यहाँ पे मस्कारा बॉक्सेस हैं, कॉम्स पड़े हुए हैं, हेयर पेन्स हैं, नीडल पड़े हुए Here we see हैं. other things like combs and mascara. ये pot के? अब ये सारी क्ले पॉटरीज आ गई हैं उनकी. Okay. ये जो बीच में पड़े ना ये स्टोरेजेस थे वीट वगैरह के लिए, वाटर स्टॉक के लिए. oil Okay, के so लिए. what we see here is a pot dating back to Greek times, and that was used for water इस storage. साइड पे यहाँ पे जो क्ले पॉटरीज आप देखेंगे इसमें ये स्टेम पॉटरीज भी पड़ी हुई है, पेंटेड पॉटरीज है, ब्लैक व्यूरिंग पॉलिशिंग ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं. और ये वो ब्लॉक्स पेंट थे जो बनाते वक्त इनके ऊपर यूज़ किया. Okay, so these implements was used to make pots, and we see the actual pots up there and here. इसके अलावा यहाँ पे ये स्माउटेड जार एंड वाटर ट्यूब वगैरह आ गए हैं. Okay, so we see other uses of water and butter and oil. और ये आगे वाटर फ्लास्क वगैरह हो गया. So all these are water casks, no doubt used to water down the meal. ये आगे इनके ड्रिंकिंग कप्स हैं. And here we see some drinking cups. Yeah, Greeks. ये अपेक्स है ग्रीक्स एंड पर्शियन. Okay. So these are Greek and Persian artifacts, viewers. और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्लेट्स वगैरह, डिशेस वगैरह, बाउल्स वगैरह एंड Okay. कुकिंग पॉट्स वगैरह. Okay, so here we see some cooking pots, bowls, and other utensils. ये खूबसूरत किस्म के कुकिंग पॉट्स भी यहाँ पे हैं. So we can see how beautiful they are of the time and how much intricacy there is. अब ये जो साइड्स पे हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पड़ी है, वाटर कंडेंसर है, जिससे वो पानी की प्योरिफिकेशन के लिए, मेडिसिन के लिए, हर्बल वगैरह और स्पेशली वाइन वगैरह के लिए इसको यूज़ किया. Wow, so what we see here is a water condenser that would be used to purify water, especially for wine. ये सामने छन्नी वगैरह, स्टीलर वगैरह पड़े हुए हैं, वो फुट क्लीनर आ गए, ड्रेनर पाइप. और इसके अलावा ये स्मॉल यूटेंसिल्स भी आप टॉप पे देख सकते So we see some small utensils and some cleaning implements down here, I think. हैं. ये भी इनके कंटेनर स्टोरेजेस वगैरह. एक और another container for water. तो ये जो पड़ेगा ना ये सारे उनके ग्राइंडर्स वगैरह पड़े हुए हैं जो व्हीट वगैरह के लिए, स्पाइसेस, चिली पाउडर्स के लिए यूज़ किया करते थे. In this case, we see some grinding implements, viewers,
all these are used for grinding and making into flour, whether it's wheat, millet, or other forms of flour or cereal. डिफरेंट शॉप्स वगैरह इसकी वेट में है, तो सबसे पहले हमारे पास ये ब्लैक स्मिथ शॉप से मिले हुए ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, जिसमें आप ये हैमर, चिज़ल और पाइप वगैरह, ओवन पाइप, ड्राइंग पाइप देख सकते हैं. So here we see some metal objects or implements that would have been used by blacksmiths. और सेकंड साइड्स पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे गोल्डस्मिथ शॉप से डिस्कवर्ड हुए हैं. इसमें कुछ मॉल्ड वगैरह भी पड़े हुए हैं जिनमें ज्वेलरी बनाया करते थे. ये नीचे कॉइन्स के मॉल्ड भी पड़े हुए हैं जिनमें कॉइन्स बनाया करते थे. So what we see here is goldsmiths' tools with molds and other implements that would have been used to make perhaps necklaces and earrings, etc. इसके अलावा यहाँ पे ये फार्मिंग का सामान भी है जिसमें आप ये एक्सेस एंड लीड्स आप देख सकते हैं. So here we see farming implements, viewers, that were used by the farmers of the time. और सेकंड साइड्स पे यहाँ पे आप वेपन्स देख सकते हैं. इसमें कुछ शील्ड्स के पीसेस पड़े हुए हैं, एरो हेड, नाइफ एंड डबल एजेड सॉर्ड. So there's some weapons here, viewers. So there's a shield and then arrowheads and double-headed swords. यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशन वगैरह के लिए यूज़ किया Wow. करते थे. और इसके अलावा ये हॉर्स ब्राइडल, विंग्स के कम्बाइन एंड फोटोग्राफी. So in this casing we see implements and containers for medical purposes. So medicines would be put into those, and then there's various needles and other medical implements. ये सामने डिफरेंट ज्वेलरी वगैरह लगी, उनके मिनरल वगैरह, मतलब पत्थर उनसे जो ज्वेलरी बनाएगी वो भी पड़ी हुई है यहाँ पे. So here we see the various forms of jewelry and the stones that were used, so whether they were rubies, etc. बेसिकली टेक्सटाइल उस ज़माने में कैपिटल था इसका, धारा का भी. और ये सिल्क रोड का भी मेन कॉरिडोर था बिटवीन चाइना एंड यूरोप, तो इसलिए यहाँ हर चीज़ देखने को मिल रही है. ये सामने कीज़ आप देख सकते हैं, लॉक का पीस पड़ा है, डो हैंडल, हुक्स एंड नेल्स वगैरह भी मौजूद है. So Texila was the capital of Dharma at the time, and it was an important town on the Silk Road, viewers. So here we can see some more of the implements. So there are some chains and handles that would be used. वीट पड़ी है, ऑक्सीडाइज वीट उस तरह की. Okay. टॉप पे बेल्स पड़े हुए हैं. Okay. So लैंप पड़ा हुआ है, पीस अमृत पड़ी है, पीसेस ये temples से इस्तेमाल. टेंपल से इधर ही आपको. So here we see some artifacts such as bells, etc., from that would be used in wells. Okay, viewers, I do hope you've enjoyed our visit to the Texila Museum. So until the next time, I bid you farewell. Thank you for watching. Please keep watching, and until the next time, I say goodbye. अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, दुआ में याद रखना. अल्लाह हाफिज़.